लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी टॉकिंग अबाउट द megalithic age, or within that we were talking about the megalithic economy. इकोनॉमी में अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, सच एज subsistence, crafts production, and trade in commerce or exchange. Right? Now, within the subsistence pattern, हमने किसकी बात करी? Agriculture. Other sources of subsistence, hunting and gathering, or domestication of animals. Right? Agriculture we have talked about. क्या फीचर्स डिस्कस किए थे एग्रीकल्चर के बारे में? व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वाज इट? टेक्नोलॉजिकली sophisticated agriculture with the use of artificial irrigation and iron implements. The high degree of crop variety. और क्या देखा था एग्रीकल्चर के बारे में? Where was agriculture concentrated? In the river valleys and coastal plains. Both food and non-food crops were produced. The size of the surplus was large, and agriculture was the basis, or this agricultural surplus was the basis for other economic activities. Right? It was the primary occupation of the people, but it also created the necessary means for other economic activities such as crafts production and trade. Right? Next, क्या देखना है हमको? Hunting and gathering activities. कैसे पता लगता है इसके बारे में, हंटिंग और गैदरिंग के बारे में? Different sources such as bones of wild animals in
मेगालिथिक बेरियल्स। और कैसे पता लगता है? द डिपिक्शन ऑफ hunting scenes in megalithic paintings. How else do we get to know about them? In the form of graffiti on pottery. पॉटरी के ऊपर भी पेंटिंग्स कुछ बनी होती हैं, उसमें वाइल्ड एनिमल्स दिखाए जाते हैं. हंटिंग सीन्स आर डिपिक्टेड. हाउ एल्स? इन द फॉर्म ऑफ मेगालिथिक sculptures found generally on menhirs. ठीक है, where a large variety of animals as well as birds, wild birds are depicted. Right? Hunters are shown usually hunting with bows and arrows or spears or javelins or slingshots or catapults. Right? Now we get evidence of these both from the burials. तो ये dead occupants के साथ bury भी किए जाते थे. These were grave goods also, and they are shown in paintings as well. Sculpture में भी दिखाए जाते हैं. ठीक है? Write this down. Hunting and gathering. Spears or javelins. Right? भाले की तरह ही होता है. Javelin throw आपने देखा होगा, sport होता है. Write this down. Hunting and gathering. लिखो. The megalithic people augmented their food supply to hunting and gathering. Next point. Evidence of such activities can be found in the form of A, B, C, D करके लिखना. Can be found in the form of A, bones of wild animals in megalithic graves. Wild animals in megalithic graves. और किस तरह के एनिमल्स को हंट करते होंगे? Pigs, wild boars, a large variety of antelopes, एंटीलोप मतलब जो सींग वाला हिरन होता है उसको एंटीलोप बोलते हैं. A large variety of antelopes, elephants, and wild buffalo. Along with various species of wild birds. A large variety of wild birds.
ठीक है, बी लिखो, megalithic paintings, megalithic paintings at places such as Marayur, and Hire Benkal, Hire Benekal. So attest to, also attest to hunting activities by the megalithic people. They are shown, they are shown hunting, they are shown hunting peacocks, deer, wild boar, and large cats such as tiger, cheetah, and leopard. Tiger, cheetah, and leopard. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ सेम में, नेक्स्ट सी सी नहीं लिखना, सब पॉइंट इसमें लिखना हंटिंग में, पेंटिंग में. Now, हंटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज. ज्यादातर मेन दिखाए जाते होंगे या वुमेन? मेन, राइट डाउन, मोस्टली मेन appear to be involved in hunting as attested to, by the megalithic paintings. हंटिंग अकेले करते थे या ग्रुप में करते थे? बोथ काइंड्स ऑफ हंटिंग्स होते हैं. ठीक है, राइट डाउन, बोथ इंडिविजुअल्स, हाँ सब पॉइंट, both individuals and groups pursued hunting as an activity, was hunting simply a means to obtain food, or was it also a mode or method of sport, type of sport? स्पोर्ट नहीं था. तो टाइगर, चीता, लेपर्ड ये सब क्यों मार रहे हैं? बिकॉज दिस इज वेरी टफ टू किल, डेंजरस भी है, और उसका मीट जो है बहुत ज्यादा नरिश करता नहीं है, इट इज हार्ड ऑल्सो, कंज्यूम नहीं कर सकते. तो क्यों करते होंगे ऐसे लोग ऐसे ऐसे जानवरों को हंट? फॉर स्पोर्ट ओनली. ठीक है, तो राइट डाउन, हंटिंग appears to have been a subsistence activity as well as sport, किस एज के मेन एसोसिएटेड होते होंगे हंटिंग से?
young, middle-aged, or old, usually the younger people. So write down. The youth appear to have been involved in hunting activities primarily. और हंटिंग को सोसाइटी में कोई वैल्यू मिलता था, हंटर्स को इज्जत मिलती थी या कोई नहीं मिलती थी? मिलती थी. व्हाई? बिकॉज दिस वाज एन एक्सट्रीमली मार्शल कल्चर, राइट. एंड जहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, वहां पे उन कल्चर्स में हंटर्स को हमेशा प्रेस्टीज मिलता है, राइट. राइट डाउन. हंटिंग seems to have been a prestigious activity. इसका कोई एविडेंस है? अरे ग्रेव्स में सबसे ज्यादा एनिमल्स किसके ग्रेव्स में होते होंगे? हंटर्स के ग्रेव्स में, राइट. राइट डाउन. एज इंडिकेटेड, हाँ, एज इंडिकेटेड by the large quantity of animal bones and weapons found in some graves. Full stop. C लिखो. Hunting scenes also appear as graffiti on megalithic pots. As graffiti on megalithic pots. Next, D. Megalithic sculptures on menhirs also depict a large variety of wild animals as well as hunting scenes. Variety of animals as well as hunting scenes. E लिखो. Megalithic burials have also yielded a large number of hunting weapons such as bows and arrows, spears, slingshots, javelins, spears, slingshots, javelins, and catapults. Full stop. The arrows and spears generally had
a wooden shaft, and an iron tip. Shaft and an iron tip. और जो कैटापल्ट्स एंड स्लिंग शॉट्स में प्रोजेक्टाइल्स यूज होते थे वो किसके बने होते थे जनरली? किस चीज के बने होते होंगे? लोहे के या स्टोन के? स्टोन के। क्यों? थोड़ा सोचो। लोहा बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था। दीज ऑब्जेक्ट्स वर क्वाइट हेवी आल्सो। मारना है एक एनिमल को, ठीक है, उसको डिसेबल करना है, तो इतना आयरन अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली, जैवलिन या एरो तो आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन ये स्लिंग शॉट से जो भी प्रोजेक्टाइल मारोगे, मान लो आयरन का फेंक दिया आपने बोला, तो इट मे गेट लॉस्ट, यू मे नॉट बी एबल टू रिकवर इट। तो इट वाज इजियर टू यूज राउंड स्टोन्स फॉर देम। ठीक है, तो राइट डाउन राउंड स्टोन्स। हाँ, इसी पर राउंड स्टोन्स shaped like balls were used as projectile weapons. Full stop. They have been found in large quantities from megalithic graves. They have been found in large quantities from megalithic graves. क्लियर है? समझ में आया इतना? तो ए बी सी डी ई ये हो गया ना? अच्छा, नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखना। अभी हमने क्या देखा है? एविडेंसेस का, राइट? नेक्स्ट लिखो, हंटिंग was also supplemented with gathering activities. Full stop. Sub point. While most hunters were men, gathering was pursued mostly by, कौन इन्वॉल्व होगा इसमें? Women. Gathering was pursued mostly by women. ठीक है, नेक्स्ट सब पॉइंट लिखो, small groups of women have been depicted gathering a variety of fruits and herbs from forests. Gathering also going to require the same degree of age restriction as hunting? नहीं, gathering में all ages were involved. So write down, women of all ages, sub-point, women of all ages have been depicted gathering various items.
ठीक है. Next main point. Apart from hunting and gathering, fishing also appears to be an important activity. Full stop. सब पॉइंट. क्या एविडेंस मिला है फिशिंग के लिए? फिशिंग के लिए यूज होने वाला इक्विपमेंट मिला है एंड फिश बोन्स हैव आल्सो बीन फाउंड. किस तरह का इक्विपमेंट? वो नेट्स तो नहीं मिले हैं, प्रॉब्ली किसी धागे के बनते हैं, सम फाइबर वाज यूज्ड, बट नेट को सिंक करने के लिए जो टेराकोटा सिंकर्स होते हैं, वेट्स होते हैं, दोज हैव बीन. सम फिशिंग हुक्स हैव बीन फाउंड एज वेल, और उसके अलावा फिश बोन्स हैव बीन फाउंड. ठीक है सर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. फिशिंग इक्विपमेंट such as terracotta net sinkers, and fish hooks have been discovered from burial sites at Kakalghat, and Khapa. ये साइट्स के नाम. at Kakalghat and Khapa respectively. काकलघाट से टेराकोटा नेट सिंकर्स और खापा से फिश हुक्स मिले. नेक्स्ट सब पॉइंट लिखो. अपार्ट फ्रॉम दिस, fish bones have been discovered from places such as Yelleshwaram, नेक्स्ट सब पॉइंट. और कोई एविडेंस मिलता है? ग्राफिटी ऑन पॉटरी, तो वहां पे भी फिश मोटिव्स हैव बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड. राइट डाउन. पेंटेड मेगालिथिक पॉटरी also contains depictions of a large variety of fish, along with other marine animals such as turtles or alligators. Turtles and alligators. ठीक है. नेक्स्ट सब पॉइंट लिखो. Tortoise shells have also been discovered from megalithic graves. Along with seashells.
seashells. तो इतना इंफॉर्मेशन है आपके पास. अब ये बताओ that did the megalithic people consume only fresh water fish or both fresh as well as salty water? केवल नदियों में पॉन्ड्स में फिशिंग करते थे या फिर ओशन में भी फिशिंग करते थे? दोनों में करते थे. So write down. It appears that the megalithic people consumed both fresh and salt water fish. The point. In fact, fishing appears to be an important activity for coastal communities. As indicated by the presence of fishing villages on both the eastern and western coast. Both the eastern and western coast. ठीक है, तो ये हो गया हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग. क्लियर? और कोई सबसिस्टेंस एक्टिविटी? एनिमल डोमेस्टिकेशन. गिव द नेक्स्ट सब हेडिंग सबसिस्टेंस के अंदर. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. देखिए, animal domestication at a prominent scale is depicted by what? The discovery of a large number of domesticated animal bones. ठीक है. Next main point. Apart from this, और कोई एविडेंस मिलता है हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन? अरे, और कोई एविडेंस कि ये लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे? हाँ, तो मिलेगा, पेंटिंग्स मिलेगा. Apart from this, megalithic paintings also depict grazing and herding scenes. Grazing and herding scenes. ठीक है. और कोई एविडेंस? पेंटिंग्स में कुछ और भी दिखता है. क्या दिखता है? मेगालिथिक ट्रेन होती थी. These were in the form of cattle raids. एक ट्राइब से उनके कैटल छीनने के लिए उसके ऊपर अटैक किया गया. राइट डाउन. अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्दर नेक्स्ट पॉइंट. फर्दर, some paintings also depict cattle raids
ठीक है. What were the types of animals that were domesticated? तो कैटल ही होगा, राइट. काउ, बफलो एटसेट्रा. और उसके अलावा पिग्स और different types of birds such as ducks, chickens, etc. or a small number of goats and sheep also. और कोई non-food items, non-food वाले animals, horses and dogs were also domesticated. The megalithic people domesticated a large variety of animals, including cattle, a large variety of animals, including cattle, pigs, ducks, chickens, goat and sheep, evidence suggests that cattle rearing was much more important as compared to was much more important rearing was much more important as compared to sheep and goat pastoralism. Sheep and goat pastoralism. ठीक है, क्लियर है. And do you think that this was a practice that emerged during the megalithic period itself, और उसके पहले से चल रहा था? पहले से चल रहा था. This was a practice that was continuing from the Neolithic. So write down subcontinent. This practice was a continuation of the earlier Neolithic tradition of cattle rearing. Of cattle rearing. Next main point. The domestication of pigs and chicken indicates the ऑडियो नहीं आ रहा. ऑडियो सर, ऑडियो गायब हो गया सर एक बार. हाँ ऑनलाइन हो गया.
यार है। ओके, तो लास्ट क्या लिखा है? आने लग गया शायद। हाँ नहीं, लाइट तो नहीं ऑफ हुआ था। नहीं, माइक भी ऑन था। हाँ, अब आ रहा है। मे बी। सुदीप, जरा बताओ कि लास्ट कौन सा पॉइंट लिख रहे थे आप? अच्छा, चिकन। हाँ, द डोमेस्टिकेशन ऑफ पिग्स एंड चिकन्स इंडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। द प्रैक्टिस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। तो बताओ, पोल्ट्री फार्मिंग या मिक्स्ड एग्रीकल्चर को परस्यू करने के लिए क्या नेसेसरी प्री कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है? किस स्टेज पे आकर के ये पॉसिबल होता है? पिग्स, चिकन वगैरह को पालने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, फॉडर चाहिए होता है, राइट? एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a large agricultural surplus is present. So write down the practice of poultry farming. Sub point. The practice of poultry farming was possible due to the relatively large agricultural surplus. The relatively large agricultural surplus. ठीक है। ऑन द होल हम क्या बोल सकते हैं अबाउट द मेगालिथिक सबसिस्टेंस पैटर्न? दैट इट वाज वेल बैलेंस्ड। ठीक है। It was capable of supporting a large population, and the surplus produced by this large subsistence or diverse subsistence base was sufficient to catalyze other economic developments such as craft production and commerce. Okay, so write down on the whole. On next page. On the whole, comma, the megalithic people had a diverse subsistence base. Had a diverse subsistence base. While agriculture was the mainstay of the economy, while agriculture was the mainstay of the economy, supplementary activities such as hunting, gathering, fishing, and animal husbandry were also prominent. Animal husbandry were also prominent. Full stop. Next point. The large and diverse subsistence base facilitated both population growth as well as secondary economic activities.
न्यूलिथिक वाला डिस्कशन आपको याद है, जब हमने न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर का रोल इंपॉर्टेंस डिस्कस किया था, तो व्हाट वर द थिंग्स दैट केम आउट ऑफ इट? और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो एक होता है, उसके अलावा सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है एग्रीकल्चर का? किस तरह से फर्क पड़ता है? जो सरप्लस बनता है दैट इज अ काइंड ऑफ, और यू कैन से दैट इज एन accumulation ऑफ वैल्यू जो कम्युनिटीज के पास होता है, और इस वैल्यू का वो क्या यूज करते हैं? एक्सचेंज प्रमोट करने के लिए, रेसिप्रोसिटी के बॉन्ड्स क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए किया जाता है। अराउंड एग्रीकल्चर a number of cults, beliefs, religious symbols, practices also evolved. ठीक है, तो राइट डाउन। अपार्ट फ्रॉम, हाँ नेक्स्ट में, apart from the obvious economic benefits, comma, the agricultural surplus also produced far-reaching social, cultural, religious, and political outcomes. Sub point. Surplus generation led to the rising importance of land as a resource, resulting in A and B. A, unequal distribution of land. So the more powerful are going to have large portions of land and the most fertile land, right? और जो लेस पावरफुल होंगे उनके पास कम लैंड होगा, लैंड नहीं होगा, और पुअर लैंड को एक्सेस होगा, राइट? एंड बी, राइजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। और ये जो सोशो पॉलिटिकल टेंशन है, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। किस तरह का सोशल चेंज? द इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस। और पॉलिटिकल चेंज, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा बिटवीन ट्राइब्स। some tribes are going to be defeated, subjugated, or absorbed by stronger tribes, resulting in the emergence of large chiefdoms. ठीक है, write down next main point. Socially, the unequal distribution of wealth led to the emergence of different classes as indicated by संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर का डिस्कशन याद है? Over there we had come across a work known as the तोलकाप्यार। तोलकाप्यार में 4 कास्ट्स को मेंशन किया गया है। Do you remember those 4 castes? अरासार, अनंतहार, वानीगार एंड विलालार, राइट? कौन कौन होते हैं दी अरासार?
those with political power, the ruling class. Ananthar, the priestly class. Vanigar, the trading communities. And Velalar, the cultivators. Okay? And this kind of caste-based occupational division became possible only because of professional specialization and unequal distribution of resources. अगर वो नहीं होता तो हर कोई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता. There would not have been this degree of specialization. Okay? So write down. Ultimately, this economic differentiation led to occupational specialization, reflected in Sangam literature such as the Tolkappiyam, which mentions the existence of 4 professional castes. नाम लिख सकते हो आप. Arasar, Anandhar, Vanigar and Velalar. ठीक है. Next main point लिखो. Politically, the changing nature of the subsistence pattern resulted in intense competition for resources and power. Intense competition for resources and power. Small tribes were subjugated resulting in the emergence of big chiefdoms. ठीक है. नाउ जो संगम लिटरेचर है वो बड़े चीफ्स को क्या बोलता है? पेरुमक्कल. Right? Write down. Sangam literature, sub-point. Sangam literature refers to big chiefs as Perumakkal. We have literary evidence for this. ठीक है. Gradually, these big chiefs are also going to get reconfigured. कैसे? Conflict is not going to end. It is going to intensify even further. The scale of warfare is going to become much larger. और उसकी वजह से क्या होगा? These big chiefs are now going to come under the influence of a single big king. ठीक है. तो उनसे भी ऊपर एक सरदार आ जाएगा. And these kings emerged for the first time during the Sangam age. और कितने kings emerge हुए? 3 kings emerged.
And Sangam literature refers to these three kings as Munvendra. ठीक है, so write down. Gradually, the large chiefs or large chiefdoms were also reconfigured, resulting in the emergence of powerful kings known as Munvendras in Sangam texts. ठीक है, सोशली हमने देख लिया, पॉलिटिकली देख लिया क्या क्या चेंज हुआ है, कल्चरली रिलीजियसली क्या चेंज होगा, रिलीजन और कल्चर में क्या चेंज आएगा. अरे, is the nature of art going to change or is it going to remain the same? चेंज हो जाएगा. पहले किस तरह के सीन्स डोमिनेट करते थे, हंटिंग गैदरिंग सीन्स डोमिनेट करते थे. अब किस तरह के सीन्स डोमिनेट करेंगे, पैस्टोरलिज्म के सीन्स, फार्मिंग के सीन्स डोमिनेट करेंगे. राइट. अर्लियर what was the nature of the religion? Primarily animism. Right. Now fertility cult, sacrifices are going to become more prominent. Earlier warriors important तो होते थे, but because of the lower scale of warfare it was not affecting the social values, societal values, ethos को नहीं affect कर रहा था. अब ethos को भी affect करेगा. Right. The warrior cult is going to become prominent. Warriors को worship किया जाएगा. Hero stones are going to be erected for them. Now, as part of the fertility rituals, ancestor worship is also going to be incorporated. ये एक और चेंज आएगा यहाँ पर. ठीक है, हड़प्पन में भी था. तो सेम पैटर्न जो हमने पहले देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के बाद चेंज हुआ है, वो यहाँ पे भी विजिबल होगा. तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. ठीक है, लिखिए, लिखो मेन पॉइंट. हाँ, the expansion and rising importance of agriculture profoundly affected the megalithic religion and culture as well. Affected the megalithic religion and culture as well. Reflected in A, B, C, D करके. A, the emergence of art associated with settled life. B, the rising popularity of the fertility cult. C, the prevalence of sacrificial rituals. D, the growth of
ancestor worship, E, the emergence of a strong warrior ethic, and hero worship. F, an intense form of tribal devotionalism. तो डिवोशनलिज्म यहाँ पे भी था, बाकी जगहों पे भी था, बट यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस था. व्हाई वाज दिस? एवरी ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड सारी ट्राइब्स इस समय किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी? एक दूसरे से लड़ाई में, राइट? एंड जनरली इट इज easier to mobilize people to go to war giving the call for religion to defend their gods and goddesses, right? तो इसकी वजह से जो फीलिंग ऑफ डिवोशनलिज्म इमर्ज हुआ वो बहुत ज्यादा इंटेंस था एज कंपेयर टू दी अदर्स. तो अभी लास्ट में क्या लिखा है? ई, intense form of tribal devotionalism born out of constant tribal conflict. ठीक है, नेक्स्ट सब पॉइंट ई हो गया ना? एफ, एफ हो गया. एफ के बाद जी, a strong sense of regional identity. क्यों होगा ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी? वंस अगेन बिकॉज ऑफ द सेम. थर्ड वाला पॉइंट क्या है? हाँ, सी बताना. हाँ, प्रिवेलेंस ऑफ सैक्रिफिशियल रिचुअल्स. ठीक है सुदीप? हाँ, तो what is the last thing that we have written? Regional identity. Why strong regional identity? Because of different conflicts between tribes belonging to different regions. Okay? So this also resulted in the emergence of a strong sense of regional identity. People began to associate their own communities with their surroundings, with their regions. They resisted the political encroachment of outsiders. But at the same time, पूरा कांटेक्ट बंद करना पॉसिबल नहीं था. एंड देयरफॉर this identity, this regional identity became stronger and stronger in the psychology of the megalithic. And this is also reflected in the Sangam literature. Sangam literature में once again Tolkappiyar talks about the existence of five regions and 5 types of communities, such as Kurunji, the Mayadal community, the Palai community, etc. Right, belonging to different regions. So coastal regions, mountainous regions, pastoral lands, so desert regions, और फ्लड प्लेन्स के लोगों को अलग अलग नेम्स से उसने बुलाया है. राइट? तो these are the socio-economic, political, and cultural changes that were the result of the transformation of the subsistence pattern, the growth of agriculture as the most important economic activity. Okay? Next main point लिखो. Therefore,
the beginning of agriculture can be considered to be the foundational step beginning of agriculture could be considered to be the foundational step beginning of agriculture during the megalithic age. Beginning of agriculture during the megalithic age can be considered to be the foundational step for the emergence of the historical age in South India. Historical age in South India. ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन लिखिए जरा. The megalithic subsistence pattern prepared the megalithic communities of South India for their historical age examined. What is this question talking about? क्या address करना है हमें यहाँ पर? नहीं, subsistence pattern में जो changes हुए during the megalithic age, कैसे उसने साउथ इंडिया के लोगों को उनके हिस्टोरिकल एज के लिए प्रिपेयर किया. व्हाट इज द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल एज ऑफ साउथ इंडिया? संगम एज, राइट. तो हिस्टोरिकल फेज, प्री हिस्टोरिक फेज में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे सबसिस्टेंस पैटर्न का रोल इंपॉर्टेंट है. This is exactly what we have discussed in the previous portion. ठीक है, तो लास्ट वाले कंक्लूडिंग रिमार्क्स है ना, वहीं से आपको यहाँ का आंसर पड़ेगा. किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया साउथ इंडिया को सबसिस्टेंस पैटर्न ने? by bringing about large scale social, political, religious, economic and cultural change, right? So this is what we need to highlight and link with changes in the subsistence pattern. बताइए, कर लेंगे? हो जाएगा ना 200 वर्ड्स में? नहीं, पूरा का पूरा मतलब जो कल से पढ़ाना शुरू किया है वो सब आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस क्या है? You don't have to discuss the features of the agriculture, you don't have to discuss the features of hunting, gathering, fishing, animal domestication. लेकिन
जो चेंज आया है सबसिस्टेंस पैटर्न में विद द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी वजह से किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, उसको डिस्कस करना है। तो अब ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, yeah, on the whole, the megalithic people had a diverse subsistence base, while agriculture was the mainstay of the economy. Supplementary activities such as hunting, gathering, fishing, and animal husbandry were also prominent. The large and diverse subsistence base facilitated both population growth as well as secondary economic activities. Apart from the obvious economic benefits, agricultural surplus also produced far-reaching social, cultural, religious, and political outcomes. तो यहाँ से आपको आगे वाला डिस्कस करना है, ये वाला जो पोर्शन है वहां पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक चीज तो हमने देख ली है, दी इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर सबसिस्टेंस पैटर्न। अगला क्या देखना है हमें? crafts production, right? Because of the large agricultural surplus, it became possible for people to pursue secondary economic activities on an organized scale, organized level पर। और किस तरह के क्राफ्ट्स में लोग इन्वॉल्व थे, बताइए जरा। What were the important crafts professions of the megalithic people? Crafts production, पॉटरी मेकिंग, ठीक है, और बताओ। अरे मेगालिथिक पीपल को हम कैसे जानते हैं सबसे ज्यादा? उनके बेरियल्स से, राइट। और बेरियल्स में क्या यूज करते थे वो? मेगालिथ्स, बिग स्टोन्स। और स्टोन्स को अनफिनिश्ड रॉ फॉर्म में ही लगा देते थे या फिर उसको प्रोसेस करते थे? सम प्रोसेसिंग वाज डन, राइट। तो स्टोन वर्कर्स और sculptors were also present. Megalithic age is also known as iron age of South India. तो यहाँ पे iron metallurgy, apart from that smithing of other metals. तो metallurgy also appears to be an important profession, right? जो मेगालिथिक सेटलमेंट्स थे वो किसके बनते थे? घर वगैरह, वुड यूज होता था ऑन अ लार्ज स्केल, राइट। तो वुड वर्कर्स और carpentry also emerged as an important profession. Apart from this, मेगालिथिक बेरियल्स में और कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं? डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए ह्यूमन बींग्स क्या यूज करते हैं? ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, राइट। तो मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज also appears to be an important profession. अच्छा, अब कार एन आर कैसे होता है? खेल कूद के, राइट, आउट। और घर के अंदर टॉयज आर गोइंग टू देयर, सो टॉय मेकिंग। Apart from this, some objects are going to be required for ritualistic purposes, right?
अब रिचुअलिस्टिक पर्पसेस में यूज क्या होता है ट्राइबल कम्युनिटीज में? वन इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिलीजन्स इज जनरली, तो आर्टिकल्स को स्कल्प्ट करने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज होंगे. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मटेरियल्स यूज वाज टेराकोटा, राइट? सो terracotta sculpting also emerged as a prominent craft during this period. ठीक है, so these are some of the important apart from culture sued by megalithic people. तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ये सारे भी आ जाते हैं. हाँ, फैब्रिक टेक्सटाइल्स ऑल्सो दैट कैन बी मेंशन्ड. लेकिन जो फैब्रिक्स या टेक्सटाइल्स है ना, इट डज नॉट अपीयर कि उसके लिए कोई डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ वर्कर्स एज अ प्रोफेशन उसको परस्यू कर रहे थे. द मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स वाज प्रोबेबली अ हाउसहोल्ड एक्ट. तो अपने फ्री टाइम में सारे इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व होते थे. इट इमर्ज्ड एज अ कमर्शियल सूट इन द संगम पीरियड, क्योंकि फैब्रिक की जो फॉरेन डिमांड है वो बढ़ रही थी, या फिर एक्सटर्नल जो डिमांड है फैब्रिक का, दैट इज व्हाई इट बिकेम अ कमर्शियल परस्यूट. लेकिन यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं सम लेवल ऑफ कमर्शियल fabrication was probably going on. ठीक है, लिखिए इसको. क्राफ्ट प्रोडक्शन. The megalithic sites of South India give evidence of well-developed traditions of specialized crafts such as pottery making, stone and terracotta sculpting, metal smithing, carpentry, lapidary. लैपिडरी मतलब ज्वेलरी मेकिंग, मतलब बीड मेकिंग होता है, तो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाने. लैपिडरी, LAPIDARY. टॉय मेकिंग एंड टेक्सटाइल्स. Full stop. This is not surprising. This is not surprising if we consider the large agricultural surplus of these communities. Large agricultural surplus of these communities. ठीक है, वन बाय वन लेट अस लुक एट ऑल ऑफ देम. सबसे पहले देखते हैं मेटलर्जी को, ठीक है, और मेटल्स को देखते हैं. तो अंडर क्राफ्ट प्रोडक्शन मेटल्स को ट्रेडिंग मिलती है, मेटल स्मिथिंग और मेटलर्जी. ठीक है,
तो कौन कौन से मेटल्स यूज करते थे मेगालिथिक पीपल? आयरन और कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, अलग अलग आर्टिफैक्ट से बनाते हैं, राइट। मोस्ट कॉमन कौन से थे इसमें से, कौन सा था इसमें से? आयरन वॉज द मोस्ट कॉमन। आयरन क्या बनाने के लिए यूज किया जाएगा? टूल्स एंड वेपन्स। प्राइमरीली विच काइंड ऑफ टूल्स? किस काम के लिए टूल्स? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती थी? एग्रीकल्चर। तो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल टूल्स मेड ऑफ आयरन वर इन ग्रेट यूज। उसके अलावा किस तरह के टूल्स? बाकी साजो सामान बनाने के लिए भी कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। कारपेंटर किससे काम करता है? हथौड़े से, चिजल से, नेल्स एक्सेट्रा। पॉटर किससे काम करता है? पॉटर व्हील से काम करता है, राइट। ये आपका बर्तन बनाने वाला किससे काम करेगा? वो भी कोई ना कोई मटेरियल यूज करेगा इन ऑर्डर टू शेप दी metals into the desired shape, desired utensil, right? So some tool making tools or object making tools were also made using iron. Apart from iron, और क्या यूज होता था? कॉपर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। हाउएवर ब्रॉन्ज काफी रेयर है, ठीक है। तो ऑल्दो द मेगालिथिक पीपल appear to be familiar with the science of making alloys, this knowledge was probably not very widespread. पूरे के पूरे मेगालिथिक कल्चर से केवल 2 साइड से ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स मिले, राइट। कंपेयर दिस टू दी स्टोन एज, सॉरी मेटल एजेस ऑफ अदर कल्चर्स। कैलकुलेटिव पीरियड में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ये ब्रॉन्ज एज में क्या देखने के लिए मिलता है? widespread use of bronze, right? In this scenario or in this context, South Indian megaliths were quite unique, क्योंकि बाकी जगहों पर अर्ली स्टेजेस से ही मेटल alloying used to be prominent, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उसका बहुत मिनिमल यूज, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड वर ऑल्सो यूज। किसके लिए होगा सिल्वर और गोल्ड का यूज? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए प्राइमरीली, राइट। However, silver seems to be rarer as compared to gold. Why? Gold was locally available, silver had to be imported from outside. ठीक है, लिखो। Metallurgy seems to be a prominent secondary activity, for the megalithic people. Full stop. Next point, the metals used included iron, copper, bronze, silver, and gold. Subpoint. However, iron was the most prominent. Full stop. Next main point. Iron was used for making both weapons and tools. Subpoint. Iron weapons included spearheads and arrowheads,
Swords, knives, and daggers. Swords, knives, and daggers. And swords, knives, and daggers. Full stop. Next up point. Iron was also used for making agricultural implements such as plows, axes, hoe, hose, hose, sickles, etc. Next up point. Apart from this, iron was also used for making manufacturing tools such as hammers, chisels, and anvils. Anvil, ANVIL, anvils. ठीक है? Next main point लिखो. Iron smithing seems to be a widespread activity. A widespread activity. कैसे बोल सकते हैं कि वाइड स्प्रेड एक्टिविटी है? क्योंकि कई साइट से मेटल फाउंड्रीज मिली और मेटल फाउंड्रीज में क्या मिला है? फर्नेस मिला है, रॉ आयरन ओर मिला है, आयरन स्लैग मिला है. तो जो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जो स्लैग बच जाता है, जो उसको ऊपर से हटा के डिस्कार्ड करना पड़ता है, वो मिला हुआ है. और क्या मिला है? सम फ्यूल हैज बीन फाउंड सच एज वुड, चारकोल, डंग एटसेट्रा. राइस हस्क मिला है, राइट. तो बेलोज मिले हैं विच आर यूज्ड टू ब्लो एयर इनटू द फर्नेस, राइट. So these kinds of things have been found from various sites. This indicates that iron smithing was not a localized activity, rather it was pursued by various communities living in different regions of South India. Okay? Write down some point. This is indicated by the discovery of a large number of iron foundries. Iron foundries. Full stop. Next sub point. These foundries have yielded objects such as furnaces, crucibles, wires, TUYERES, bellows, iron ore,
and slag. Full stop. Next sub point. The fuel used included materials such as wood, charcoal, dung, and rice husk. Rice husk. ठीक है, तो ये हो गया आयरन मेटलर्जी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट मेन पॉइंट. Copper and bronze objects have also been discovered. Stop. Subpoint. Copper was used for making tools, weapons, and ornaments. Tools, weapons, and ornaments. Subpoint. On the other hand, the use of bronze was rather limited. Next point. This indicates that while the megalithic people were aware of the technique of alloying metals, it was not used in a widespread manner. The point. This may be due to the non-availability of certain metals used for making alloys, such as तो एक मेटल होता है आर्सेनिक, ठीक है, तो दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एलॉय मेकिंग. एक मेटल होता है टिन, दैट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द एलॉय, ठीक है, सच एज आर्सेनिक एंड टिन, तो ये दोनों लोकली अवेलेबल थे नहीं, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक एलॉयज एट अ लार्ज स्केल. ओके, नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो. गोल्ड एंड सिल्वर were used for making ornaments, such as necklaces, bangles, and diadems. DIADEM. सर पे लगाते हैं diadem. It's like a crown, ठीक है, and diadems.
Full stop. Subpoint. However, silver appears to be quite rare. Subpoint. This can be attributed. This can be attributed to the non-availability of silver locally. To the non-availability of silver locally. Full stop. Agla subpoint. On the other hand, gold was obtained from the mineral-rich belt of Karnataka. That's a point. Not only was it used locally, not only was it used locally, comma, it was also exported. Was also exported to different portions of the subcontinent. Different portions of the subcontinent. ठीक है? Is this clear? तो ये हो गया metallurgy. Next, write down pottery. The megalithic people produced a large variety of potteries. Including black and red wares, black burnished pottery, red ware, and RCPW. Within brackets, you can write russet coated, russet, RUSSET, russet coated painted ware. Russet coated painted ware. Okay. Now, these different types of fabrics were not localized. यानी कि ये हर जगह पे पाए जाते थे. Write down. Next main point. The diverse ceramic, CERAMIC, ceramic cultures were not, the diverse ceramic cultures were not localized and were used across the southern megalithic.
Next main point. The megalithic people had an advanced ceramic culture, had an advanced ceramic culture. तो पॉटरी में रिफाइनमेंट को किस तरह से मेजर किया जाता है, एडवांस्ड है, बैकवर्ड है? कलर से ही नहीं, कि जो क्ले यूज हो रहा है वो फिल्टर्ड है, लेविगेटेड है या नॉन लेविगेटेड है. तो अगर फिल्टर्ड क्ले होगा तो ऑल द ग्रेन्स यूज्ड फॉर मेकिंग द पॉट्स आर गोइंग टू बी ऑफ द सेम साइज. तो जो फैब्रिक है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट इवन. ठीक है, तो उसमें डिफॉर्मिटीज कम है. दैट इज वन मेजर. सेकेंड मेजर, जो शेप दिया जा रहा है उसको, वो रेगुलर है या नहीं है, राइट? तो अगर हाथ से बनाया जाएगा तो नॉन रेगुलर शेप्स आएंगे, लेकिन अगर व्हील टर्न पॉटरी होगा तो रेगुलर शेप्स आएंगे. जब उसको फायर किया जा रहा है तो इज द टेम्परेचर इवन थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस और नॉट? क्योंकि अगर अनइवन होगा तो वंस अगेन वॉर्पिंग होगा, डिफॉर्मेशन आएंगे पॉटरी में, चारिंग होगा पॉट्स का. वो है या नहीं, राइट? तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है? वेल लेविगेटेड क्ले से बनाया जाता था, व्हील टर्न्ड पॉटरी होता था, एंड इवन फायरिंग होता था. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर. राइट डाउन सब पॉइंट. मेगालिथिक पॉटरी was made of fine levigated clay. Made of fine levigated clay. Full stop. Next point. It was wheel turned. It was wheel turned. Wheel turned. WHEL. Wheel turned. अरे व्हील जो पहिया होता है, व्हील 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 टर्न्ड and evenly fired. And evenly fired at a constant temperature. Sub point. Who were the kind of people involved in pottery making? क्या ये रोजमर्रा का काम था या फिर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी? स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी. सब पॉइंट. मेगालिथिक pottery making was a specialized profession. जो प्रोफेशंस इन्वॉल्व होंगे तो क्वालिटी इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी मच हायर, राइट? अच्छा, किस काम के लिए पॉट्स बनाते थे? व्हाई वर पॉट्स यूज्ड? फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस. तो यूटिलिटेरियन पॉटरी भी होता था, फॉर एग्जांपल स्टोरेज जार्स, बिन्स एटसेट्रा. यूटेंसिल्स, कुकिंग के लिए, खाने के लिए, पानी पीने के लिए या पानी स्टोर करने के लिए जार्स, पौधे लगाने के लिए वासेस और पॉट्स एटसेट्रा, राइट? टम्बलर्स वर मेड आउट ऑफ इट पानी पीने के लिए. इसके अलावा some decorative items were also there. For example, हाईली पेंटेड और स्कल्प्टेड वेयर्स, तो छोटे छोटे वेसल्स बनाएंगे, राइट? मे बी सम मिनिएचर birds or animals are going to be made using pots, etc. Right? So write down next main point. Megalithic pottery. Megalithic pottery included both utilitarian and ornamental wares. Utilitarian and ornamental wares.
Sub-point. Utilitarian pottery included a large variety of tablewares. Comma, vases, tablewares, vases, VASE, VASE, vases, pots, planters, bins, and jars. Next point. Ornamental pottery included items such as ceremonial wares, and decorative items such as sculpted pots, and tumblers, and miniature animals and birds. Okay. Was megalithic pottery painted or unpainted? दोनों तरह के होते. Write down. Next main point. The megalithic people produced both painted and unpainted wares. पेंटेड पॉट्स होते थे, उसमें क्या होता था, क्या क्या पेंट, किस चीज की पेंटिंग्स होती थी? हंटिंग सीन्स फ्रॉम नेचर, एनिमल्स की पेंटिंग्स, ट्रीज की पेंटिंग्स, हॉर्सेस की पेंटिंग्स, बैटल सीन्स, यानी कि फॉर एग्जांपल हॉर्स रेड, राइट, या फिर कैटल रेड्स पे लोग जा रहे हैं, या फिर वॉरफेयर चल रहा है, ये सारी चीजें, कम्युनिटी सीन्स वर पेंटेड एटसेट्रा. राइट डाउन. सब पॉइंट. Paintings included themes such as hunting, animals, birds, gathering activities, feasting, battle scenes, cattle raids, horse riders, and mythological images. ठीक है. So this was the pottery scene. Next, carpentry. Woodworking seems to have reached
an advanced stage, have reached an advanced stage next point. Carpenters were involved in construction activities as many houses were made using wooden material as support beams. As support beams. Next point. The megalithic people utilized a large variety of hardwoods for making houses and furniture. Point. The toolkit of a carpenter included the toolkit. कौन-कौन से tools use करते हो? Toolkit of a carpenter included items such as hammer, chisel, saw, cutting wire, scraper, shaver, etc. Next point. Megalithic carpenters were adept at jointing and planing. Jointing and planing. PLANING. Jointing के लिए क्या यूज करते थे? Both nails were used and some joints were made without using any glue or nails. कैसे? वो जो ग्रूव एंड सॉकेट वाला टेक्निक होता है, मॉर्टिस एंड टेनेंस उसको बोलते हैं. मॉर्टिस एंड टेनेंस लगा करके बोथ जॉइंट्स विद एंड विदाउट नेल्स वर मेड. राइट डाउन. सेम पॉइंट में ही सब पॉइंट लिखना. द carpenters were familiar with the technique of using mortises and tenons for making joints. Mortises and tenons for making joints. ठीक है. तो ये हो गया
carpentry. Next, stone working and sculpting. Stone working and sculpting. Megalithic burials involved the transport and processing of a large quantity of stones. Large quantity of stones. Next point. Therefore, stone sculpting was a prominent labor-intensive occupation. Labor-intensive occupation. Next point. The megalithic stone workers were familiar with a large variety of locally available stones Full stop. Next point. The megalithic graves are remarkable for the symmetry and alignment of their stone surfaces. Next main point. This indicates a good grasp. This indicates a good grasp over geometry and material science. Point. Stone objects were made by using both metallic and stone tools. Both metallic and stone tools. Next point. Smooth surfaces were obtained through a process of chiseling, grinding, and polishing. Chiseling, grinding, and polishing. Next point. Some megalithic objects were also highly sculpted.
with patterns and images. With patterns and images. ठीक है? So ये हो गया stone sculpting. Next, lapidary. लिखो lapidary. LAPIDARY. Write down. The megalithic people used beads and necklaces made out of a large variety of materials such as semi-precious stones, corals, shells, and precious metals. Okay. Next main point. Jewelry making was a specialized activity. And some centers were known for their jewelry industry. Subpoint. Greco-Roman texts refer to Arikamedu, Korkai, Korkai, and Kanchipuram as important jewelry emporiums. Emporiums. EMPORIUM. Emporiums. ठीक है? Next main point लिखो. Many of the semi-precious stones were not available locally and were probably imported from both North India as well as overseas. Okay. Subpoint. This is also attested to by the Greco-Roman and local texts.
Next point. Next main point. The use of precious metals on the whole for jewelry making was rarer as compared to semi-precious stones. As compared to semi-precious stones. Next point. Next main point. Necklaces were the most common items followed by bangles. Followed by bangles. The point. On the other hand, the use of rings was much less common. Next, toy making. टॉयज किस ऑब्जेक्ट के बनते हो, ये किस मटेरियल के बनते होंगे? मेटल्स के नहीं, वुड के और टेराकोटा के टॉयज बनते हैं. ठीक है, तो राइट डाउन wood and terracotta were the most commonly used materials for making toys. Wood and terracotta were the most commonly used materials for making toys. टॉयज में क्या बनता होगा ज्यादातर, बताइए. बच्चों के लिए क्या बनाते थे? डॉल्स, एनिमल्स, राइट, ये सब बनता था. सम विसल्स एक्सेट्रा, ये सब बनता था. राइट डाउन. नेक्स्ट मेन पॉइंट, मोस्ट कॉमन types of toys included dolls of various sizes, and animal figures. Including horse, elephant, monkey, and horse riders. Okay, ये हो गया toys. Next, terracotta sculpting. Terracotta sculpting. Okay. The use of terracotta for making a variety of objects was widespread. Next point. It was used
for making A, B, C करके लिखो A utensils, B storage bins, C toys, D idols, E sarcophagus, F coffin lid, coffin lids, LID, coffin lids. कहाँ तक पहुंचे F तक G. They were also used for lining the graves. So instead of stone, in some cases, terracotta was also used. So you can write uh, slabs for lining graves. They were also used as tiles for flooring in houses. ठीक है कहाँ तक पहुंचे G H tiles for flooring. ठीक है tiles for flooring. So these were the uses of terracotta. Next, write textile. बस हो गया textiles देखो the megalithic people cultivated large quantities of cotton, and the manufacturing of cotton textiles appears to have been a household activity. Next point. During the later stages, cotton manufacturing became commercialized, and large textile centers such as Orayur and Kanchipuram emerged. But this was during the Sangam age. Okay? Orayur and Kanchipuram emerged. That's main point. Apart from cotton, other natural fibers such as hemp and a large variety hemp, H-E-M-P, hemp, and a large variety of reeds
REEDs of reeds were used for making mats, ropes, baskets, tents, and tarpaulins. Tents and tarpaulins. ठीक है, तो ये हो गया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग. So these are the crafts and crafts production of the megalithic people. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने सबसिस्टेंस कवर कर लिया है, क्राफ्ट प्रोडक्शन कवर कर लिया है. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट ट्रेड, एक्सचेंज. ठीक है, तो राइट डाउन. ट्रेड, हाँ, थर्ड वाला है इकोनॉमिक एक्टिविटी. megalithic communities began exchanging a large variety of goods as part of a need-based exchange network. Need-based exchange network. ठीक है. एंड व्हाई वाज दिस नेसेसरी? क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग रीजन्स में रह रहे थे और सारे आइटम जो उनको चाहिए थे वो लोकली अवेलेबल नहीं होते. तो राइट डाउन. दिस वाज द रिजल्ट ऑफ the rising necessity of goods that were not available locally. एंड जैसे जैसे सरप्लस बढ़ता जाएगा ये नीड और बढ़ेगी और कम होगी, बढ़ेगी. तो राइट डाउन. दिस डेवलपमेंट became more prominent with the growth of agriculture and the population. Now, initially, what was the scope of trade? कितने एरिया में होता होगा? In different regions, right? तो इंट्रा रीजन होता था. फिर उसके बाद longer distance trade became possible with the development of trade routes which were frequented by local merchants or regional merchants. तो साउथ इंडिया में ही एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन के बीच में ट्रेड होना शुरू हुआ. फिर उसके बाद इंटर रीजनल, राइट, और इंटर सिविलाइजेशनल. तो अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट नाउ ट्रेड स्टार्टेड टू टेक प्लेस. बट जो सबकॉन्टिनेंटल ट्रेड था उसमें कहाँ के ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते थे? नॉर्थ इंडिया वाले या साउथ इंडिया वाले? नॉर्थ इंडिया वाले ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते थे, राइट. तो जनरली लैंड रूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट होता था. दिस वाज ड्यूरिंग दी मौर्यन पोस्ट महाजनपद पीरियड ऑनवर्ड्स. ठीक. अच्छा, फिर उसके बाद international trade also started happening from the 1st century BC onwards. Indo-Roman trade with the southeast portion of Asia, right? So Thailand, Myanmar और Indonesia वगैरह से भी trade emerge हुआ. But this was towards the end of the megalithic age. Write down. Next point. The scope
and volume of trade, the scope and volume of trade increased gradually in relation to the level of material development. The point. By the end of the megalithic age, a large trade network had emerged, consisting of local, intra-regional, inter-regional, and international trade. Next point, subpoint. Next subpoint. Some settlements were located along prominent trade routes. And these were the earliest to urbanize. Okay? And along prominent trade routes, and these were the first to develop urban characteristics during the Sangam age. Next point. Next main point. Important items of export. Included क्या चीजें? Spices. तो पहले लिखो spices, gold, jewelry, sandalwood, and cotton fabrics. Third point. Imports included copper, horses, wine, and bullion. Bullion is the precious metals. ठीक है? तो रोमन्स फॉर एग्जाम्पल बहुत कम चीजें इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे. दे वर बैलेंसिंग देयर ट्रेड बाय इंपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है? सो ये हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स. टेक डाउन अ क्वेश्चन. Briefly discuss the nature of the megalithic economy. In what way
was it a precursor to urbanization? In what ways was it a precursor to urbanization? ठीक है? I think you should be able to address this. हाँ, नेचर में आप तीनों के बारे में बात करेंगे, सब्सिस्टेंस, क्राफ्ट्स एज वेल एज ट्रेड, ठीक है। और फिर उसके बाद कैसे इट वाज अ प्रीकर्सर टू संगम एज अर्बनाइजेशन, ये आपको डिस्कस करना है। तो हाउ द इकोनॉमिक चेंजेस व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेगालिथिक एज प्रिपेयर्ड द साउथ इंडियंस और साउथ इंडियन सोसाइटी फॉर अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द संगम एज। So that is what we need to discuss. किस तरह से प्रिपेयर किया? सबसे पहले तो लार्ज सरप्लस वाज क्रिएटेड, कई सारे क्राफ्ट्स डेवलप हुए, जो ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप हुए, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेन कॉन्टैक्ट्स आल्सो इमर्ज्ड. Trade between South India and North India also started to take place from the 6th century BC onwards. And all of this played a very crucial role in harbinging the Sangam age, right? That is what we need to talk about. हो जाएगा? Word limit उतना ही है, 200 words, 15 marks. तो आज हमने देख लिया है इकोनॉमी, मेगालिथिक पीरियड का कवर हो गया है। अब क्या बचता है? सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन वगैरह, ये सब चीजें तो बचे। तो कल